Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in final part that will be 6 of database management system. So this is the final part. In this part we will finish our database management system project in C++. So in this part we will delete record for any specific student. First of all, we have to declare a function. Yes, here. So here we have to declare function for delete. So void delete, and here we have to get our structure with the help of student and also the object of that structure, because we have stored 100 copies in it. So in the body of that function we have to do some coding, but first of all we have to clear our screen. So system clear screen, and then we have to declare string type variable that will help us in delete our new row number, in delete in our existed row number रोल. ओके, सो ये हमने एक रोल नंबर बनाया जो कि हमारी मदद करेगा किसी भी रोल नंबर को डिलीट करने में. उसके बाद हम यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा कि ये हमारे क्या काम आ सकता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्प्ले अ मैसेज दैट delete record, यानी किसी यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि रिकॉर्ड को डिलीट कर दें. सो आफ्टर दैट वी हैव टू चेक इफ आई दैट वी हैव डिक्लेयर्ड ग्लोबली I greater than 0, then in that case it is okay. Otherwise in else part displays that database is empty. मतलब अगर i 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर देन तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट की कॉपीज़ इसमें पाई जाती है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. तो इट्स ओके, ये ठीक है. पे इसके अंदर जो भी हम कोडिंग करेंगे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए वो करेगा काम. बट अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट एल्स पार्ट में आए एंड डिस्प्ले टू अस दैट डेटाबेस इज एम्प्टी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इन इफ बॉडी वी हैव टू राइट रूल नंबर for delete. Rule number for delete, and we have assigned it with the help of rule number variable. ओके, यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाना है रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए. इंट ए, और इसको मैं असाइन करता हूँ 0 से, ए को मैं लेस देन करता हूँ आई से, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट कॉपीज़ है वो आई में पाई जाती हैं. एंड वी हैव टू इंक्रीमेंट I, and in the body of that for loop but before that yes, we have to check so in the body of that loop we have to check if our current row number for delete equal to current copy of any student, and here we have to pass index number a because our whole copy is stored now in a, and dot previous roll number that we have stored in structure for student roll numbers. So if it is so, then just in the body of that first of all count variable must be increment, and then if it is so, then increment count
वेरिएबल, बट अगर ऐसा ना हो तो ये भी चेक करें, आल्सो चेक इट दैट इफ काउंट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी कॉपीज नहीं पाई जाती है. सो इन दैट केस इट्स मीन दैट देयर इज नो कॉपी फॉर एनी स्टूडेंट दैट वी हैव स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट. सो इन दैट केस यू हैव टू displace that record not found. Okay, now we have to do some coding here in this part for our student, because we have 100 student and if we want to delete any specific student data, then for that we have to do some coding. But before that we have also here यहाँ पे हमने आई को क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा. यानी अगर ये रिकॉर्ड को डिलीट करता है तो स्वैपिंग के काम ये आएगा. ये भी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा. इसको इसको हम यहाँ पे नहीं करते, अदरवाइज़ ये एरर देगा. तो मैं इसमें आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ टेम्पररी वेरिएबल बनाने होंगे. तो मैं यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल बनाता हूँ जो कि रूल्स एंड पूरे स्टूडेंट की डेटा को स्वैप करने के काम आएंगे. सो स्ट्रिंग मैं इसको यही पे करता हूँ, जो हमने रूल नंबर बनाया था इसी के साथ ही करता हूँ. तो t_rule यानी टेम्पोररी रूल नंबर, आल्सो टेम्पोररी नेम ऑफ द स्टूडेंट, आल्सो टेम्पोररी क्लास ऑफ दैट स्टूडेंट, आल्सो वी हैव टू टेम्पोररी. ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्लोट है परसेंटेज मार्क्स को चेक करने के लिए. सो हियर वी हैव टू फ्लोट टेम्पोररी टोटल मार्क्स, टेम्पोररी OBT of 10 marks एंड टेम्पोररी परसेंटेज. ठीक है, ये हमने कुछ टेम्पोररी वेरिएबल बनाए जो कि हमारे स्टूडेंट की डेटा को स्वैप करने के काम आएगा डिलीट करते वक्त. अब हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, बट मैं इसको थोड़ा तरतीब देता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है. ओके, हम कहाँ पे थे, हम इफ स्टेटमेंट में थे कि अगर हमारा जो डिलीट रूल नंबर है ये इसमें स्टोर हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है जो भी किसी स्टूडेंट की करंट हमारे पास कॉपी है, करंट कॉपी. तो ओके, तो यहाँ पे जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है इसमें स्टोर करते हैं टेम्पररी रूल नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था, इसको हम इसमें स्टोर करते हैं जो भी हमारा. बट वी हैव टू, यहाँ पे हमने एक लूप चलाना है पहले, बिकॉज वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स. सो हियर वी हैव टू रन अ लूप. सो फॉर दैट फॉर int j इक्वल टू a, बिकॉज अब हमारा जो i में जितने भी स्टूडेंट स्टोर थे अब उसकी इंडेक्स नंबरिंग a में आया, तो मैं j को इक्वल करूँगा a और j को मैं लेस देन करूँगा i से एंड j को मैं इंक्रीमेंट करूँगा. एंड इन द बॉडी ऑफ दैट लूप नाउ वी हैव टू डू और स्वैप आर रूल नंबर. सो टेम्पोररी नंबर मस्ट बी इक्वल टू current index of any student with the j+1 dot rule. और जो टेम्पोररी वेरिएबल नेम है इसमें हम स्टोर करते हैं करंट ऑब्जेक्ट एंड j must be +1 डॉट नेम. एंड टेम्पोररी क्लास जो है इसमें हम स्टोर करते हैं s j+1 डॉट क्लास
एंड टेम्पोरेरी वेरिएबल जो अभी हमने बनाया स्वैपिंग के लिए, और वो था टोटल मार्क्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट स्टोर्ड। इसमें स्टोर करते हैं हम करंट j+1 एंड टोटल, एंड जो करंट हमारे पास OBT है, सॉरी टेम्पोररी OBT में हम स्टोर करते हैं करंट जो हमारे पास J में स्टोर है अभी, और ये इसमें स्टोर करते हैं। और इसका जो वेरिएबल था वो था आई थिंक OBT, एंड जो हमारे पास परसेंटेज है करंट, इसके हमने वेरिएबल बनाया PR परसेंटेज, इसमें हम स्टोर करते हैं यस डॉट प्रीवियस परसेंटेज। यानी हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये इसलिए किया कि ये स्वैपिंग के काम आएगा। जो भी हम पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा रिकॉर्ड होगा उस स्टूडेंट का, वो सबसे पहले यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये टेम्पररी इसमें स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद अब हम इसको स्विप करते हैं। तो स्विप करने के लिए हम क्या करेंगे, जो करंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसको हमने J में स्टोर किया था, इसकी इंडेक्स और इसकी जो रूल है इसको हम देते हैं हमारा टेम्पोररी वेरिएबल जस्ट फॉर स्वैपिंग। ओके, एंड आल्सो s of j एंड फॉर नेम ऑफ द स्टूडेंट इसको हम देते हैं टेम्पोररी वेरिएबल, क्योंकि अब हमारा सारा डेटा इसमें स्टोर है। s of j क्लास, इसको हम देते हैं टेम्पोररी क्लास, एंड s of j डॉट, इसको हम देते हैं टेम्पोररी डॉट, एंड s of obt सॉरी j डॉट OBT, इसको हम देते हैं टेम्पोररी OBT ऑफ 10 मार्क्स जो भी हम टेम्पोररी में स्टोर किए हैं। एंड हियर वी हैव टू आल्सो स्टोर इन परसेंटेज और टेम्पोररी परसेंट टेम्पोररी PER। ओके, ऐसा करने में हमने ऐसा क्यों किया, सबसे पहले हमने जो टेम्पररी वेरिएबल बनाए थे रूल नंबर, टेम्पररी रूल, टेम्पररी नेम, क्लास, टोटल ऑफ 10 परसेंटेज, उसको हमने करंट कॉपी सारे पास किए। तो ये हमने ऐसा किया क्योंकि हम बेसिकली किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारा सारा रिकॉर्ड इन वेरिएबल्स में आ गया, ये जो टेम्पररी है। इन टेम्पररी से हमने डेटा पास किया असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। हमारे जो कॉपी है करंट S और उसकी जो करंट इंडेक्स J है और उसकी जो प्रीवियस नंबर थे रूल, नेम, क्लास, उसको, तो इस केस में वो इसको डिलीट कर देगा। और साथ में हम यहाँ पे I को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट, क्योंकि ये जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, सॉरी डिक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट। यानी अगर हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, अगर 7 रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं तो इसको वो डिक्रीमेंट कर देगा और 6 में चला जाएगा। ओके, हम एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए एक प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले करते हैं। सो हियर वी हैव टू डिस्प्ले अ मैसेज जस्ट फॉर आवर ब्यूटी दैट रिकॉर्ड इज डिलीटेड, यानी डिलीट करते वक्त ये मैसेज भी, डिलीट करने के बाद ये मैसेज हमें डिस्प्ले करें कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ओके, तो हमने बना दिया। तो मैं इसको देखता हूँ कि क्या मैंने इस पूरे फंक्शन को कॉल किया है, जो इस फंक्शन को मैंने बनाया। सो वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शन फॉर डिलीट आर रिकॉर्ड ऑफ एनी स्पेसिफिक एंड वी हैव आल्सो पास स्टूडेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने सिस्टम क्लियर स्क्रीन किया, कुछ टेम्पोररी वेरिएबल बनाए फॉर डिलीट रिकॉर्ड, एंड हमने काउंट वेरिएबल बनाया जो हमारे पूरे जो कॉपीज़ है स्टूडेंट की उसको बारी बारी से इंक्रीमेंट करते रहे। उसके बाद हमने मैसेज डिस्प्ले किया डिलीट रिकॉर्ड, एंड देन वी हैव चेक दैट इफ I greater than 0, in that case you have to do all for this coding, but if it is not so then just display us that else part, sorry,
Where is the else part? There is the else part. Just displays that database is empty. And in the body of that if statement, first of all we have a display that rule number for delete, and we have stored in a rule number that we have declared. उसके बाद हमने एक लूप चलाया जो पूरी यहाँ पे हमारे स्वैपिंग है रूल नंबर्स की, डेटा की, उसके चलाने के लिए. एंड आल्सो हमने कंडीशन चेक किया कि जो भी डिलीट रूल नंबर है उसमें स्टोर कर दे करंट कॉपी ऑफ एनी स्टूडेंट. एंड उसके लिए दोबारा हमने इसके बॉडी के अंदर एक और इफ़ चलाया स्वैपिंग के लिए, स्टूडेंट की रूल नंबर्स या स्टूडेंट की जो डाटा है उसको स्वैप करने के लिए. उसके बाद हमने ये सारा कोडिंग किया. सो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी. तो चलें हम सिंपली इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं. सो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड ओके. तो डिलीट फंक्शन के नाम को हमने चेंज करना होगा क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है. सो वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ दैट फंक्शन बिकॉज डिलीट इज़ अ कीवर्ड, रिजर्व वर्ड, एंड कंपाइलर डू नॉट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ वर्ड्स. सो डेल में रखता हूँ मीन्स डिलीट. And we have also to call that function in main in our switch statement in case of 5. So here I will call that function delete, and also we have to pass the object of that structure s. So now I will compile that compile and run. So now it will work. So see, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ले आऊँ, ओके. तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हम किस तरह रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू प्रेस 5 फॉर डिलीट रिकॉर्ड, and its one database is empty because we didn't inserted any record. So now I will press enter and I want to insert record. So press 1 and insert your record. So roll number 101, name Noor, class 10th, total marks 1100, obtain marks 300. Do you want to add another? Yes. For student 2 I will roll number 2, name Ali, class 10th grade, total marks 1100, obtain marks 400 or 4000, sorry not 4000, 400. So do you want to add another? Yes. For student 3, so rule number 3, name Mariam, class 12th grade, total marks 1100, obtain marks 900. Do you want to add another record? No, it's enough. So now I will press N and it will lead me to the control panel. Okay, now I want to display all these records that I have entered. So I will press 2 and it will show me all these records for student 1, student 2, student 3. And we know that student 1 row number is 101, name Noor Saeed, grade 10th, marks 1100 and total obtain marks 300 and percentage 27 point something. उसके बाद जो स्टूडेंट 2 है उसकी रो नंबर है 102, नेम अली, क्लास, मार्क्स एटसेट्रा. Similarly for student 3. Okay, so now I will press entered, and now I want to search for any particular student. For example, if I press 3, it's want me that search room number for search. So I want to search the record of Mariam. So I know that Mariam's room number is 103. So it will show me the record of Mariam, room number 103, name Mariam, class 12th grade, total marks 1100. So you can easily search record for any student. So now I will press entered. Okay, now I want to update record, but before update record, to show you that how can we delete record, because we have in this part we have created coding for delete record. So let's update record. So I will press 4. Rule number for update. So I want to record update for Mariam. So I will enter here 103, and now it's want me new rule number for Mariam. So 00000000. Just for example, name from Mariam to what? Ali, not Ali. From Mariam to Shazia. And class 4th year, 14th year, 15th year maybe,
and total marks 1100 and obtain marks 1100. Okay, now I want to check that a record updated or not, so let's display, press 2. Okay, so we updated student 3, that was Mariam, and her roll number was 103 but now 000. Name from Mariam to Shazia, from 10th grade to 15th grade, marks from 1100 to 1100, and from 900 to 1100 of 10 marks. So you can easily update any record of any student. Okay, now I want to delete that record or any student, so I will press 5. Okay, rule number for delete. So I want to delete record for Noor, and I know that the number of Noor was 101. Okay, record is deleted. Okay, so record is deleted. So now we will see that it is true or false. So let's press 2 to watch our record. So student 1, rule number 102. Yes, first we have 3 students, and the first student was Noor, and his rule number was 101, and name was Noor Saeed, grade I think 10th or I don't know, I forgot. But we have deleted successfully the data of Noor Saeed, because we have first 3 students, 101, 102 and 103. Okay, here we have faced a mistake because it's printed only 2 times. So let's see that what is the error in that part. Okay, so we have to terminate this bracket. Now I will compile and run. Okay, this time it will work. So first of all I will press 1 to insert any record. So 101, name Noor, class 12th grade, total marks 1200, obtain marks 1100. We wanted no enough. Okay, now I want to delete this record of Noor, so I will press 5. So in that case it's want me that row number for delete, so I will enter here 101 because I know that 101 is the number of Noor. So it says that record is deleted successfully. So let's see. So now I will display that it is true or false. So yes, database is empty, so we have created successfully our delete record. So you can simply create database management system. So that was the final part of that. So if you like this video, then subscribe my channel Anonymous Knowledge, and also share this video with your friends. So thank you so much for watching this video. See you in the next project. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.